गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गन शॉट। गन शॉट में आपको सबको दोबारा स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हमारे नजदीक है, चाइना's लूमिंग लार्ज इन द नेबरहुड। देखिए, हमारा नेबर सारे छोटे छोटे हैं दृश्य में और चाइना बड़ा है, सबके ऊपर मंडरा रहा है एंड ही इज पोजिंग लॉट ऑफ डेंजर टू दिस। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जनरल गोपाल कृष्ण मुरली हैं। लेट मी वेलकम हिम। वेलकम जनरल। हेलो, थैंक यू शंकर। या मैं ये सबको आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल मुरली एंड आई आर कोस्मेट्स। वी आर फ्रॉम नेबरिंग स्क्वाड्रंस इन इंडिया। वी आर फ्रॉम आर्टिलरी। वी हैव ग्रोन टुगेदर and he's had the distinction of being the deputy commandant of School of Artillery and deputy commandant of OTA Chennai, right? और हाल ही में he spoke on this topic in the annual conference between the Chennai Center for China Studies and the National Maritime Foundation. I found the way he brought about things quite different. बहुतों से फर्क था। ये सोच विचार करने के लिए ही फोर्स मी कि ऑन दिस सब्जेक्ट। अमूमन हम सोचते हैं कि चाइना आ गया, इधर इतना पैसा लगा दिया, उतना कर दिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, डेट ट्रैप, ये वो सब है। पर इनका जिस तरीके जो अंदाज है और इनका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है, राइट? इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि टू कम and educate us on this business of China and our neighborhood. Welcome to the show once again, and your opening remarks, and then you can go about your presentation. Yeah, good evening and Jai Hind to all of you, and thank you very much, Shankar, for giving me this very wonderful opportunity to speak. In fact, in front of, I would say, people of eminence and who are quite knowledgeable on the subject. And I must say in the beginning itself that I am a novice to such, expert forums, etc. So I'll try to be very simplistic in my approach and what I'm going to say about the topic that has been given to me. And I must say that Shankar has also sort of forced me to, study on the subject and, come out and air my views, so to say. I generally refrain from this sort of, talks, etc. So thank you very much, Shankar, for this great opportunity. Yeah, thanks for coming once again. अगर हो सके तो आप हिंदी में बात कीजिए, अगर नहीं हो सके तो आप कोई नहीं, आप अंग्रेजी में बात करते रहिए। एक आध अगर बीच में आप हमें मौके देंगे तो हम उसको हिंदी में I'll speak in Hindi and convert the whole thing. So I'll show your slides, your first slide. Yeah. Okay, so ये जो टॉपिक है चाइना's footprint in the neighborhood, इसका मतलब चाइना का जो भी इन्वॉल्वमेंट है हमारे नेबरहुड में, उसका एक संक्षेप लिस्ट हम बना सकते हैं और उस लिस्ट को पढ़ के जो है बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो है चाइना यहाँ पे कर रहा है और ये हमारा सिक्योरिटी में एक बाधा है या सोच हमने देना है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको सिर्फ लिस्ट के बजाय एक मीन्स एंड एंड स्टोरी, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि वो क्यों इस तरह कर रहा है, उसका क्या ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, वो क्या चाहता है अपने आप को एक ग्लोब में, अपना वर्ल्ड ऑर्डर में जो है उसका एमिनेंस या उसको जो महत्व देना है उसके ऊपर उसका क्या विचार है और किस तरह वो ये जो एमिनेंस है उसको अचीव करना चाहता है। तो एक किस्म से मैं छोटे संक्षेप में उसका एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है और उसको क्या तरीका उसने अपनाया है और क्या वो तरीका हमारे जो नेबरहुड में जो हम देख रहे हैं उसका ही जो है वो फलस्वरूप है। मीन्स इज देयर I would say the perceived grand strategy has got a behavior pattern which can be
understood, analyzed, and we can then be more proactive in our approach than being reactive. Yeah, that's a fine way of putting it. You need to be more proactive. Yeah. Right. So ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, मैंने ये 3 किताबों का जो है रेफरेंस लिया है. सबसे पहले है द 100 ईयर मैराथन बाय माइकल पिल्सबरी, जो कहता है कि 1949 से लेकर 2049 तक चाइना का डर क्या है, 7 फियर्स ऑफ चाइना, और उसका जो है क्या करना चाहता है. सेकेंड बुक जो है वो कर्नल लियोमिंग फू, जो चाइना का एक फॉर्मर कर्नल है, उन्होंने लिखा है चाइना ड्रीम, ग्रेट पावर थिंकिंग स्ट्रेटेजिक पोस्चर. इसका मतलब टाइटल में ही देखिए कि आप चाइना क्या चाहता है. तीसरा है जो रैंड कॉर्पोरेशन का पब्लिकेशन है, जो इंटरप्रेटिंग चाइना ग्रैंड स्ट्रेटेजी. तो जो मैं कह रहा हूँ ये किताबों में दिया है, इसलिए ये मेरा कुछ अलग से सोच नहीं है. ये जो पीछे जो बैकग्राउंड में एक ओबेलिक्स या जो स्तूपा देख रहे हैं आप, this is about the Tiananmen Square. This is actually a monument which inscribes all the happenings, all the problems that the Chinese have faced, the humiliation, the century of humiliation. For normal tourists, it is just Tiananmen Square, but for the Chinese, it's a motivator, and it is also a reminder of the humiliation they had faced in the past. So this is what gives them the first factor of how to overcome this humiliation. It starts from 1839, the Opium War, where the Western world captured their ports and subjugated their whole industry and trade. So from this comes the fears of China. मतलब वो 7 चीज़ों का जो है बहुत ही जो है वो fearful है, डरता है, जिसको वो ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाया है उसने. जैसे साउथ चाइना सी में वो बाहर आता है और सभी आइलैंड्स को जो है वो कैप्चर करके और उसको बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है. सो ये जो 7 फियर दिए हैं, ये उस ऑथर का जो है वो सोच है. बट ये सब जो है अगर आप देखते हैं, चाइनीज स्ट्रैटेजी दैट इज बीन इवॉल्व्ड इज टू ओवरकम ऑल दीज 7 फियर्स. And you can go to the next slide. You see this Yan Fu, the translator of Thomas Huxley's book in Mandarin. What he says is, weak are devoured by the strong, and the fittest should rule, and only the fittest can rule. So it is similar to the concept of Matsya Nyaya, जो आप लोगों को पता है, बड़ा मछली जो है छोटा मछली को खाता है. So this is the principle they adopt, and right from Mao Zedong, this concept has been adapted to their strategies. That is to eliminate competition and establish their own order. But if you look at from Indian point of view, मत्स्य न्याय जो है वो ठीक नहीं है. एक order चाहिए, internal order as well as external order in the world. It has to be a rule-based society. The third factor which motivates them is the idea of certain phrases, like the strong nation dream, which Xi Jinping has announced it more than once, and great changes unseen in a century. Such phrases are not used by the Chinese leaders, but when they use it, it is missed out by the Westerners in what China actually wants. So therefore, the analysis of the Chinese strategy flows from these issues. So अगर ये अपना फियर, अपना डर को ओवरकम करके एक स्ट्रैटेजी बनाता है, तो उसका एंड स्टेट क्या है, क्या चाहता है. 2049 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 100th ईयर ऑफ द कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सेलिब्रेशन ऑफ द 100th ईयर 1949 से लेकर 2049 तक. सो इसको आप हाइपोथेसिस समझ सकते हैं, और यू कैन एक्सेप्ट इट एज अ नैरेटिव.
on which we should be thinking about. Establish China as an equal or superior power in Asia and the world. Equal and superior means it has to overcome this whole aspect of, humiliation. So, what is the security strategy it is adopting? National rejuvenation by 2049. It's more Xi Jinping's way of motivating the people. China is a great nation. It has got centuries of culture, which it can give it to the world. We can contribute to the world order more than anybody else. So, in this, the strategy that I'm wanting to talk about is the displacement strategy, where it wants to displace the US from its position. And in doing so, how does it do it? First is the blunting the forms of control exercised by the superpower. So wherever US has got itself into a position of control, whether it is by subjugation or by appeasement or aid or whatever it is, China is actually replicating the whole thing. It is using coercion, it is using exertion, it is, has the inducements. You can see the BRI, projects which are going, what it is doing in Africa. And once it does that, it is establishing itself as a rightful, owner of that particular place by putting the Han Chinese and changing the demographic profile of a country. Now, the classical example is Tuscany province of Italy, where in Prada, the whole town and everything is all Chinese, including the police. The Italians have lost out on their traditional leather industry. So, and in this process, also establish forms of control and expand globally. All this is now translated. If you look at it into all these projects and other activities, you will find this coming into play. And ever since 1949, with the various rulers, Chinese have been following this basic feature. These are the basic features of any Chinese, security strategy. Which can be, here and there can be a little differences based on who was in power, who was the premier. When I say protect Chinese heartland excludes Manchuria, Southern Mongolia, Xinjiang, and Tibet. And of course, it did not have Hong Kong. It did not have Taiwan. What it has done is, it is, instead of establishing heartland plus a peripheral control, it has now taken over all these places, except, of course, Taiwan. And its expansion is not only territorial, it goes into outer space, cyber, as well as deep seas. And there is no rules and regulations in any of these areas. It exploits wherever there is no order. This question of periodic expansion and contraction of regime boundaries and periphery control is based on what it wants as a unified political order. And it will go into great lengths to make sure that there is this one China dream. With one China means subjugating the people by force. This issue of waxing and waning of control is basically the ideas and concepts which have been changing over time. What Deng Xiaoping followed is not followed by Wu Jintao. Similarly, the conceptual, there's differences. That is why this policy did not go into a straight line upward curve. Then, of course, you've seen this frequent and yet limited use of force where the opponents are weak. When I say heavy reliance on non-coercive strategy, passive constructions, passive developments, which is taking place, and then he takes control of that area and takes what it wants in terms of resource management, energy management, whatever it is. There is a bit of a problem in the domestic policies. There is a difference in the opinion of within the political hierarchy of China and scholars that should we go in for self-reliance and not go into external dependencies like it is got now, or should we just keep consolidating and becoming strong
and not use force. So all these aspects play into various aspects of the strategy that is end played at the end. Jinping has become as probably feels that he's now at a level where he's strong enough to say openly that he's going to exert in comparison to Hu Jintao. So we are looking at a state of China where they feel that now they can, you know, have their say in whatever way they want it, not to be dictated any terms by the Western world. In the 80s, they followed what is called the calculative security strategy. This is given in the Rand Corporation study. So be quiet, play the victim card, and keep developing. The West could not understand this, and that's how the complete manufacturing base and what China's economy is today is because of that foolishness. The gullibility, I would say, was there with the Western world rather than with China. And in this particular calculative security strategy, you will notice that it's purely economic growth that they wanted. And also, by the economic growth, they will also want to ensure a domestic order. Because, after all, if the people are happy because they are wealthy and they are being accepted world over, and therefore, there is a tendency among the people to obey the whichever, whether it's the Communist Party or the government or whatever it is. General restraint on the use of force is basically if you want to expand, you want to modernize, you cannot be expending those force. So, on the other hand, India is expending the force by forceful deployments and being reactive to situations. It's not able to expand as much as it just wants, like what China did. It remained quiet, it did not take part in any of the forums. It wanted to get itself influenced, but it did not physically get involved anywhere. And in the same process of this calculative strategy, they wanted to restore their geopolitical influence. They got through the United Nations, they got through various others, and in the manner they got themselves into the third ranking or the second ranking economically. Now, as far as it comes to India, I would say that to the world, China is following a displacement strategy. To India, it is following a containment strategy. Now, this containment doctrine is actually a Truman doctrine which was adopted by the US post the World War. It wanted to contain communism in particular and Russia, the expansion of Russia. So, what it did was it implemented what is called the Marshall Plan, wherein it gave complete aid to Germany and Europe and France to make their economy grow. In the same manner, they expanded their armed forces in such a way that they could reach out anywhere in the world. Their involvement in Korea, involvement in Vietnam, creation of NATO, all this is a result of this containment doctrine. And what I felt as, because I put it as a hypothesis, China is replicating the same thing as far as India is concerned. It is wanting to contain India within the sphere of its neighborhood and not allow it to grow because it views India as a competitor. You can call it strategic competitor, you can phrase anything, but it views India as a competitor. There's been a lot ये of good talk in your dialogues on this particular issue. You yourself have mentioned a lot about the economy and other aspects of China. ये बात मैं सबको दोबारा बताना चाहता हूं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जनरल मुरली साहब ने बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूएसए ने मार्शल प्लान इंप्लीमेंट किया ताकि वो यूरोप और जर्मनी को ऊपर उठाए, राइट? और उन्होंने एक कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन भी बनाया ताकि एक्चुअली ये कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन कुछ हद तक अगेंस्ट यूएसएसआर था और कुछ हद तक वो चाइना के साथ भी था,
क्योंकि उस वक्त उन्होंने कंटेनमेंट ट्राई किया थ्रू कोरिया और वियतनाम। जो यूएसए ने पिछली सदी में किया, वो अभी चाइना हमारे साथ कर रहा है। ठीक, ये कंटेनमेंट किस तरीके से हो रहा है? हमारे नेबर्स के तो जरिए। क्यों हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो अलग बात है। जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया है कि वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि उनको पता है कि आगे जाके अगर कोई देश इनके साथ टक्कर ले सकता है, वो है इंडिया। आगे जाके इनके इनके जो पावर कैलकुलस में कोई भी बाधा डाल सकता है, वो है इंडिया, राइट। इसीलिए अगर आप देखेंगे, ये जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह वगैरह, ये कोई नया चीज नहीं है। ये पिछले 15 साल से चल रहा है, राइट। एक एक करके हमारा नेबरहुड में इन्होंने पैर जमा लिया, राइट। वो अलग बात है, आज का हालात क्या है वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट मैं दोबारा रीइंफोर्स करना चाहता हूं। चलिए अगले स्लाइड से आप वापस शुरू कर सकते हो। या इसमें एक तरीका जो चाइना अपना रहा है वो है स्ट्रेटेजिक करप्शन। मतलब उसका जो पैसा के साथ जो खिलवाड़ करता है, स्पेशली वीक स्टेट, जो पॉलिटिशियंस हैं जो करप्ट हैं, गवर्नेंस मैकेनिज्म जो करप्ट है, उसमें पैसे के जरिए वो बहुत कुछ काम करता है इन सच अ वे दैट इसका जो रूटिंग है मनी का थ्रू न्यूयॉर्क बैंक के जरिए गया था टू मोस्ट ऑफ दी अफ्रीकन कंट्रीज। तो यूएस ने उनका एक खास सीईओ है, उसका नाम है पैट्रिक हो, दी सीईएफसी चाइना एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट, उसके ऊपर केस लगाया है। एंड ही इज सपोज टू बी दी mastermind and such an influence in managing this corruption that he's got personal influence with the presidents of Chad, Uganda, Iran, Qatar, and name a few more. So एक नेक्सस बनाया है कि अगर आप एक कंपनी जो BRI वगैरह में कर रही है, जैसे चाइना एनर्जी कॉरपोरेशन है, उसको बैन भी कर देते हो, फिर भी जो है वो बेनामी कंपनी के द्वारा और गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा और चाइना के बैंक्स के द्वारा वो प्रोजेक्ट को फिर भी कर लेता है। तो जैसे चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी CCCC has been debarred by World Bank since 2009 for 8 years, फिर भी वो काम कर रहा है। तो इसमें वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्ट्रेटेजिक करप्शन जो है, जैसे पोर्ट डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है, उसका 99 ईयर लीज में लिया है चाइना ने, और वो लीज साइन किसने किया है? डार्विन का प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया का आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। लेकिन इस पूरे डील में जो फेडरल जो इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड है FIRB ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कोई इसमें जो है दाखिल नहीं दिया है, ना ही उसमें एक्सेप्टेंस दिया है। अभी जो है लोग उसमें पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को कि किस लिए आपने वो पोर्ट डार्विन को 99 ईयर लीज में दिया है। एंड इसका जो स्केल है अगर आपको बताएं, चाइना ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड खरीदना चाहता है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है बहुत ही ज्यादा है, एक हमारे इंडियन स्टेट से भी बड़ा है, एक प्राइवेट आदमी से जिसके पास होल्डिंग है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इमेजिन एक कंट्री में जाके आप इतना सारा जमीन खरीद लोगे, आप क्या क्या कर सकते हो उसमें। ये सब जो डील होता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा होता है। सो हमारे यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नीचे लिखा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो हम देख रहे हैं, नेपाल जब कम्युनिस्ट पार्टी था, म्यांमार जो अभी का स्टेट है, मालदीव्स जब नजीब के द्वारा जो है चाइना ने इनिशिएटिव लिया था और नजीब उसमें हार गया, एंड श्रीलंका राज्यपक्षा गवर्नमेंट,
इसमें उनका री इलेक्शन का पूरा फंडिंग जो है चाइना से आया है। दीज आर ऑल रिपोर्ट्स, बट अगर रिपोर्ट्स आता है तो उसमें कुछ ना कुछ जैसे होता है जो सच होता है। सो ऐसे देश हमारे जो इर्द गिर्द हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हैं, इसको चाइना इस तरह से एक्सप्लॉइट करता है थ्रू दिस मीन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक करप्शन। सेम जो जो BRI है उसमें भी यही करता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने ये दिया है BRI इनिशिएटिव, इसको जो जो स्टेट्स जो टारगेट कर रहे हैं वो जो है पूरा करप्ट ही है, उसमें पूरा गवर्नेंस। पाकिस्तान ले लो, म्यांमार ले लो, श्रीलंका ले लो, जिसमें उसने इनरोड लिया। फिलीपींस ने उसको ट्राई किया है लेकिन उसको वो उसमें कोई एंट्री नहीं मिला उसको। सिमिलरली बांग्लादेश ने भी जो उसको चाइना को रोक लिया है। पब्लिक स्टेटमेंट बांग्लादेश ने दिया है पॉलिटिशियन ने कि so and so government official is being bribed by China for the port project। हमारे यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ समझौता था, कुछ मेमोरेंडम था। सो ये तरीका अपनाता है एक कंट्री के अंदर घुसने के लिए और कंट्री से जो है वो कुछ लेने के लिए। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर वो भी हमारे लिए सोच की बात है। इसके ऊपर कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल में जनरल शौकीन के साथ चर्चा हुआ था, बहुत अच्छा उसमें कवर किया है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक और जो सुनने में आया है वो है प्रोजेक्ट 141। ये प्रोजेक्ट जो है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी को सोचेंगे, 5 मिलिट्री बेसिस, 10 लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस चाइना पूरे दुनिया में जो है बनवाना चाहता है। जिबौती एक मिलिट्री बेस है, हमारे इर्द गिर्द में जो है बदार, हबन टोटा, अभी जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोको आइलैंड्स और उसका जो है बांग्लादेश में एंट्री करने का जो है सोच, ये सब जो है इस सोच के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट 141 एग्जैक्टली कौन कौन से जगह में होगा इसका जो है रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये अभी जो है इट्स सपोज टू बी पेंटागन का लीक रिपोर्ट है। बट ये हो रहा है, हमने देखा है, ये सभी जगह महसूस कर रहे हैं, मैं सभी जगह हम देख रहे हैं। Next is of course its massive use of media. Some few tens of thousands of YouTube channels have been banned world over because जब चाइना जो साइबर स्पेस को इस्तेमाल करता है तो बहुत बड़े तौर पे करता है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी जो है कुछ चर्चा हुआ था कुछ दिन पहले। टिकटॉक हमने बैन किया है क्योंकि टिकटॉक प्रोग्राम्ड है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इंडियन ओशन रीजन में वो अपना पांव रखना चाहता है और कोको आइलैंड्स जो है वो भी अभी चर्चा में है। एक सिगिंट बेस जो है चाइना बना रहा है और इसको किस तरह टैकल करना है म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार अभी बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है एंड बेस्ट स्टेट फॉर चाइना टू एक्सप्लॉइट, बिकॉज वेस्ट ने उसको इकोनॉमिक बैन लगाया बिकॉज ऑफ द what do you say, that democracy not being there, the military is in power. So therefore, when you look at democracy versus the autocracy, the Western world immediately puts an economic ban on it, making that state most vulnerable to exploitation. Okay. And then of course, जब वो एक्सर्शन में आता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास भी उतना ही ताकत है, तो वो जो नॉर्मल ट्रीटीज हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, उसको जहाँ उसका संबंध है, जहाँ उसको महत्व है और अच्छा लगता है उसको फॉलो करेगा, बाकी को छोड़ देगा।
जैसे ये एग्जाम्पल है अबाउट द चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना। जब एक एस्टैब्लिश्ड फोरम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो उसको महत्व देने के बजाय अपना ही कुछ करने लग रहा है। सो इट इज अ अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रीजनल ऑर्डर, एशियन रीजनल ऑर्डर। दैट इज द inference that one can draw. ये स्लाइड मैंने इसलिए लिखा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो हबन टोटा साउथ में आपने पता है कि वो पोर्ट जो है चाइना के ने बनाया है और उसको थोड़ा उसके ऊपर कब्जा है। इसको जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड मुल्लैतीव जो नॉर्थ ईस्ट में दिखाया है, ये वहाँ गए हैं फॉर अनलिमिटेड एस्टैब्लिशिंग अनलिमिटेड एक्सेस अक्रॉस चाइना। मतलब जहाँ भी जाए चाइनीज जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये रीज़न क्या देखते हैं कि सी कुकुम्बर फार्मिंग वहाँ पे मिलता है, इसलिए हम गए हैं। उसमें डीप सी एक्सप्लोरेशन भी होगा, उसमें जो है और कुछ जो बन सकता है टू ओवरलुक आवर अंडमान आइलैंड्स, उसके लिए भी वो इस जगह इस तरीके से विजिट जो है उन्होंने किया है। बट इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कोलंबो पोर्ट है, जो कंटेनर टर्मिनल पोर्ट है, द वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पोर्ट एंड द विंड प्रोजेक्ट इस जिसको अडानी ग्रुप को जो है श्रीलंका ने ऑर्डर दिया है बनाने के लिए। ईस्टर्न जो कंटेनर टर्मिनल है उसमें एक छोटा हिस्सा चाइना के पास है। बल्क ऑफ द श्रीलंकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट गोज थ्रू द ईस्टर्न कंटेनर पोर्ट। So look at the the strategy of developing the Western container port and reduce the dependency on the Eastern container port. There is a bit of ambiguity on this Eastern container port also, whether Adani has got the orders to develop that also along with the consortium with Japan. Not very sure on this the total extent of the involvement, right? बट इसमें क्या है, ये है कि हम लोग इंडिया जो है ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही करता था अभी तक कि ये ठीक नहीं है, वो गलत कर रहा है, चाइना इधर आ गया वगैरह। लेकिन अभी इंडिया के पास वो क्षमता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपको डेवलपमेंट करेंगे। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, which is what is, after all, it is just a question of we have the money or we don't have the money. As far as Bangladesh is concerned, the significance is in the port development, which is a joint Indo-Japanese project. Again, it's a positive involvement of India, unlike in the past. The second are these two, the Maitri Bridge and the Asian corridor. It is called the Asian Highway 1 and 2, which is actually linking and establishing a link to the south, the ASEAN countries. That is the idea behind this whole thing. And आप लोग सबको पता है कि जो हमारा रिलेशनशिप विद बांग्लादेश है वो टोटली ट्रस्ट में जा रहा है और फ्री एक्सेस है। और अभी जो कॉरिडोर बना है ऑन द सी, ऑन द रिवर, टू यू कैन ट्रैवल फ्रॉम Allahabad all the way to to the eastern port of to Dhaka by the steamer ships, and without any problems of entry and exit. So all this shows that we have a lot of I won't say control, but we have very good relation with Bangladesh, and they have also understood this aspect of being a little wary of China. मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये जो माटाबारी पोर्ट है जो इंडिया जापान का कोलैबोरेशन के साथ जो बन रहा है, उससे पहले ऊपर एक जगह है सोनाडिया। उस सोनाडिया पोर्ट के लिए वो चाइना वाले बिड कर रहे थे और उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा बिड दिया और बांग्लादेश के ऊपर काफी दबाव डाल रहे थे, पर हमने और जापान, खास करके जापान ने उसको होने नहीं दिया और आखिर सोनाडिया
जो चाइना का जो प्रपोजल है उसका आउट कर दिया, और ये मटाबारी पोर्ट जो है वो अभी इंडिया जापान कंसोर्टियम के जरिए हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग, अभी मैंने कमेंट्स में भी देखा कि भाई हम बोलते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका में भी हमने काफी किया है। अभी श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ही उसने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंडिया के अलावा और कहीं नहीं जा सकते क्योंकि और किसी ने हमें हेल्प नहीं किया। राइट, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी यही कहानी है। राइट, सो ये नहीं सोचना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये पूरा सीरीज में ये भी बताना आपको कि वो चाइना क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे हम भी क्या कर रहे हैं और हमारा काबिलियत भी क्या है। राइट, तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए। या ओवर टू यू मुरली, प्लीज टेक कैरी ऑन। Yeah, the next one is on China Myanmar economic corridor. So the importance of this place, as already discussed earlier, is the footprint of China is coming here, and it's a 1700-kilometer long corridor which connects through both rail and road, and it is going through the Shan country, and there's difficult countries of terrain of Myanmar. It's got a linkage to the Yangon port, and Coco Islands is due south of the whole thing. This can also be considered as an alternative to the Malacca Strait, because if you remember, one of the fears was a denial of the sea lanes. So, from that viewpoint, it is being developed. But right now, you can't say it is under development like the CPEC, but it is there on the cards, and it is being done in a small scale here and there, like the port development or Coco Island issue, and some of the stretches where it connects the Chinese heartland, and in those areas where it just gets across to the Myanmar. And these areas are being developed in small scale. But this is a point of a great concern, because not only will this give some alternate, access to the Chinese, it's give a southern, access to the Chinese to the Indian territory, and it will now force us to increase our deployments. May happen, may not happen in the immediate future, but this is what is there for us to see, in terms of we will have more resources to be deployed rather than modernize. So that is one aspect which we'll have to take. And then the demography of this place is more akin to the Myanmaris. There has been a migration pattern which is being followed through centuries. So that is another aspect which comes into play in a similar line as Srinagar, with the 99% Muslim population, where you can influence the population ideologically. Here, because of its demography and its past linkages, socially and culturally it can be influenced. The next one. So, in the same manner of periphery control, China comes to this point of making us react. Bhutan is one aspect. The one particular example that I'm saying, it's just a wild claim of a territory which is 100 kilometers inside Bhutan, right? So it is all plays against history. It is naming like Arunachal, parts of Arunachal with Chinese names. I wonder why we can't name Tibet in its original names and say we will not call it Tibet or any other. We'll call it by the ancient names, which is there in our scriptures. So these are the types and patterns that emerges when it comes to the containment strategy of India, and when you link it to the security strategy which is being followed by China. There are certain non-traditional threats. The illegal migration, which is Rohingya refugees, spillover, etc., is a problem from Myanmar to India. China has got no role to play in this, but drug trafficking, and in which the
the products, the ingredients are supposed to be supplied from China. And this is a very, a nominal way of influencing the population, as well as creating problems in the other states. It's a very cheap option, I would say. This IUU fishing, you'll be surprised by the volumes. They got the distant water fishing. US and Europe put together got 500 such ships. China has got reportedly about 17,000 ships. And it goes everywhere it wants to do deep water fishing. And it is arming these boats so that nobody can, it's like unquestioned authority over the oceans. Fostering these aspects of terrorism, left-wing extremism. In fact, the copper smelting plant in Thoothukudi, it has been reported that was under the Chinese influence to create that situation where the plant got closed. And China was importing 40% of its copper requirement from that plant. And now they are taking the same amount of copper from Pakistan. So that is the type of linkage that we have to be worried about, and we have to be more. The political consciousness is lacking in us, so therefore, they play this sort of a game with us. So I would say that it was following a weak state strategy. I am weak. I don't have. Please help me, and I will not exert. Then it came to the calculative strategy. Now it is going into a strong state strategy. I am strong. I can do this. And I will not be listening to you all the time. So these are the three possibilities China के साथ हो सकता है. So इसमें जो है हमारा क्या विचार होना चाहिए? What should we do, or what should the world do if these are the three possibilities? At least bring China into the negotiating table for an international order as is already established, and make it, adhere to something which it does not want to. It cannot go into a denial mode. It may say yes and, carry on with what it is doing, but this is perhaps one thing it can do. India has to build its capacity. It must be, if it says something, it must be a guarantor of this commitment. Like what it did with the vaccine diplomacy, so to say. It could provide to the world the vaccine, and it did not distinguish a economically strong state from a weaker state. It provided the vaccines to the weakest link in the League of Nations. The last part is, of course, it's just my idea that there has to be a synergy at the government level, not necessarily at the NSA or the NSC level, because I don't know the periodicity of that meeting, but it should be a working group involving these 3-4 agencies, so that they can do a proactive, involve mechanisms on all the spectrum, on all the fields that they can visualize and see. It cannot be a standalone MEA job to counter China. And it definitely cannot be the job of the CDS or the armed forces to say that I will do this. Only when a situation comes, the armed forces is given the leeway to act, but not otherwise. And we have the minds to, adapt this sort of a meeting of minds between the agencies and the government involved. Yeah. That was a nice way of putting everything across. हर वक्त हर बार मैं जब भी कोई भी ये सब्जेक्ट है, मैं 5 आइटम जो जल्दी फाई में, जो चाइना का क्या नजरिया इन चीजों के ऊपर और हमारा नेबरहुड के बारे में, वो मैं आज बताऊंगा. आज के जल्दी फाई में सबसे पहले देखिए, ये जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर अभी गया था म्यांमार में, उसने म्यांमार में बोला उनको आर्थिक हेल्प देंगे, और तकरीबन उसने ये मिलिट्री जुंता को रिकॉग्नाइज भी कर दिया. उसने बोला भाई आप कुछ भी कर लो, हम आपको मदद करेंगे. ठीक है. और ये टाई अप होता है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक
कॉरिडोर के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए। चाइना को कोई मतलब नहीं है कि वो मिलिट्री जनता अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरा जो इन्होंने बताया, चाइना बड़ा क्लियर है कि ई स्पोर्ट जो कोलंबो के अंदर है वो बनाना चाहता है और कॉन्ट्रैक्ट लेगा और वो अपना पैर जमाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा और ये पूरा कोशिश करेगा कि वो अपना अदानी पोर्ट और को बाहर रखे। और उसके पास ऑलरेडी चाइना का जो लीवरेज है श्रीलंका के पास बहुत है, क्योंकि श्रीलंका जो है चाइना के साथ कर्ज में डूबा हुआ है, राइट। तीसरा पॉइंट यह है कि चाइना जो नेपाल के बारे में आज उन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि जनरल शोकिन चौहान पिछले महीने उन्होंने पूरा नेपाल के बारे में विस्तार में बताया। पर बात यह है कि मैं इंटरेस्ट देखिए, चाइना का हमारा नेबरहुड के इंटरेस्ट है कि वो रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं तिब्बत से लेकर हमारा तराई रीजन तक। जब वो रेलवे लाइन आ जाएगा तो खतरा यह है कि हमारा हार्टलैंड जो यूपी बिहार के हार्टलैंड के ऊपर पहले वहां हाजिर हो सकता है, राइट। उसके अलावा China has resumed strategic naval partnerships with foreign counterparts and it aims to deepen cooperation। ये किसके साथ ये कर रहे हैं? ये बांग्लादेश के साथ, ठीक। ये बांग्लादेश के साथ लगातार कोशिश ये है कि वो अपना पनडुब्बियां और जहाज वगैरह बांग्लादेश को दें, उनके साथ एक्सरसाइजेस भी करें। कुछ ही दिन पहले जनरल नरसिम्हन साहब ने जब हमने हमारे साथ बात किया, उन्होंने एक चाइना का शिप जो है बांग्लादेश एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काफी रिकॉनेसेंस और सर्विल ये एक्सप्लोरेशन भी कर रहा था। तो ये भी ये है। हालांकि बांग्लादेश बिल्कुल चाइना की तरफ नहीं झुक गया, पर चाइना का कोशिश ये है कि उसको भी खरीद लो, राइट। और लास्ट पॉइंट ये है कि 2-3 महीने पहले वो भूटान को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो उनका अपना जो क्लेम टेरिटरीज है उसके साथ एक डील बनाए, ताकि भूटान तकरीबन जो चाइना का क्लेम लाइन है वो मान जाए। और उसका मेन चीज यही है, पासरलुंग जाकरलुंग जो नॉर्थ में है उसे कोई लेना देना नहीं है, एक डोकलाम के साथ है और एक साक्तंग के साथ है। और किस लिए है ये मैंने 2-3 दिन पहले ये जो एक्साइज बुलंद भारत के बारे में बताया, मैंने क्लियर बता दिया वो क्यों डोकलाम चाहते हैं और वो क्यों साक्तंग चाहते हैं, राइट। तो ये थे आज के 5 जल्दी 5 में। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, राइट। और जो है वो कुछ आंसर करने के लायक क्वेश्चंस हैं वो ही मैं लूंगा, ओके। राइट, ओके। ये सवाल है नील आलूवालिया का। When Russia was excluded from the Marshall Plan, she willingly joined the Bretton Woods system. Russia could have raised hell like France when gold backing was removed. Why did she not? Right? Uh, it's a very simple thing. Russia wanted an alternate form. At that point of time, Russia was was a established superpower, and USSR was an established superpower, and it was not prepared to go with whatever was going on, right? So it 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 was absolutely against whatever you know Nixon and Kissinger were doing till a point of time. Why it did not happen? Why it, could not resist the gold standard going to the dollar standard or the petrodollar was because by then Russia had started collapsing internally. Its own economics had gone bad, right? That is the reason why this happened, Neil. You have to actually go back into time and see. Okay, this is a question which you can take on, Murli. How do you see possibility of Gorkha regiment in Chinese army, especially in view of Nepal rejecting recruitment in the Indian army? It is basically to do with the Agniveers that Nepal doesn't want uh, Gorkhas to be recruited as Agniveers. Yeah, so Nepal is looking at the same structure it had for its population, right? To get free access to the Indian army. China to recruit Gorkhas
is something like, fishing in troubled waters. Will it go away from its own Han population to look at Nepalese? But we have an option. We are exercising that option of recruiting Tibetans who are more hardened in the high altitude terrain, and having a set of, a few battalions, so to say, which is actually acting as a pinprick to uh, China. sensitivities of China. That's a bit of lateral thinking which has been done by Indian governments in the past also. And I don't think China is going to get into this aspect of, appeasing the Nepalese just because they are opposing the Agnivis, the type of recruitment. They will never want to have anybody other than their own Hans. Yeah, I think that's a major thing. They don't want any kind of migration into China. They don't want not accept, but they will might कुछ दिनों के लिए कुछ गोरखास को ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. बट आई थिंक ये अभी मिलिट्री तो कोलाब्रेशन हो सकता है. हाँ, अभी कहीं सुनी बातें, देखते हैं आगे क्या होगा. बेसिकली बात कहता है वी आर ओनली रिकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज एंड डूइंग नथिंग अगेंस्ट. नहीं, ऐसी बात नहीं है. हमने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं. ओके ओके. Yeah, I see one guy called Bakul Dada. He's got a lot of questions, but I think he's got a motivated thing, so I'll not take his questions. Right. So we'll not take his questions whatsoever. Okay. Ame Bugde says Myanmar can give access of Bay of Bengal to China. That would be very big blow to us. How to keep Myanmar on our side? Yeah. Oh, Murli. No, that's a bit of a sweeping statement to say Myanmar gives access to the Bay of Bengal. It is only given access to its port, its land, its territory, to an extent which is there. I remember Shokin telling in your talk that heart of heart, the Myanmaris do not believe in China. They have a lot of apprehension on the way the Chinese are dealing and the way they are seeing their dealings with other countries, especially in the neighborhood. This question of Laos, Thailand, Myanmar, this sort of a triangle which is being formed, is also the nexus for the and the routing for your Drugs. drugs, the drug trafficking route. And that there is a small consortium of those 3-4 nations which is away from the ASEAN collaboration. Yeah. The next question is a little different. So, how do we face China if they invade Arunachal with 200,000 mini drones and attack India with nuclear satellites from space with 5G pinpoint accuracy? देख, ऐसा है कि अकी ये सब कल्पना है. That's why I put this question up. Don't live in this world. China doesn't have these capabilities. It will never have these capabilities. Okay. Sheer mathematics will not permit this kind of capability to be developed. One. Second, let me put it across very squarely to anyone who's listening. China can never invade Arunachal Pradesh. भाई आज तक उन्होंने एक पोस्ट भी नहीं लिया यांगजे में, ये क्या करेंगे? ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए. ओके. Eshan, sir, is China currently able to pose any kind of threat to our INSTC effects and our Afghan infrastructure trade projects? Yeah. What is INSTC? Yeah, look, it's part of our science and technology cooperation and all that. But the fact is that they can't, right? They will be able to put some obstacles in all our projects, and even in Afghanistan trade infrastructure and trade projects. In fact, in Afghanistan, all our infrastructure projects are complete, whether it's the Salal Dam or the
the parliament or the Zaranj Delaram highway, they've been completed. So actually, and they're using, and I mean, just to give you an inside information, the person who was building this road is someone very known, well known to me, Zaranj Dilaram Road. When the Taliban people came to know that this road is being made and it is useful for them, they came and protected this road. It was built by India, incidentally, right? So don't think, there are everyone is against India. In fact, there's a lot of goodwill for India in Afghanistan, and you see that. That is why they have reached out to you for many things. So don't worry. Look, I keep mentioning all this. We are highlighting, I am specifically highlighting what China is doing so that you understand what China is doing. It doesn't mean that they can do everything. Okay. If you have a doubt, please go through what I explained on the economy, right? Where China is. China is struggling. Their BRI is almost collapsing. They put more than $1 trillion in the BRI and they have not got one naya paisa return. Most of these countries are still indebted to China and they are not able to repay back, and their economies are collapsing. Okay, so it's not a rosy picture at all. You want to add anything, Murli, please? See, international relations, if you're not sort of straightforward in your approach, it will be read through very quickly. We are building infrastructure projects in Afghanistan that is not affecting China in any way. But if the moment you move northeast towards Xinjiang, towards the northeast parts of Afghanistan, then anybody can infer that there is some other agenda to this whole thing, right? We are creating alternate, routing through Iran, the Chabar port, the Yeah, road this link is what between. he said. He's talking of the North-South, International North-South Transport Corridor. Yeah, good you clarified it. I had written an article about it long back. I just forgot the thing. The International North-South Transport Corridor goes from Iran to Central Asia. China doesn't have anything to do with it. In fact, China is now rooting for it, part with Iran, and it helps From us. the So, from the military point of view, Tajikistan Air Base, where India has a footprint, has some sort of a strategic significance, and it is not masked or said that no, we are in a friendly manner, we are only going transport planes. No, it whatever we do, we're doing it in an open manner, and we state the exact purpose of the whole thing. That's a bit of a, like I would say, a dharmic way of looking at things. yeah. How do we activate the Tibet option to annoy or instigate the Chinese every time they rename places or does something similar? Is it possible, as you have said, that Tibetans don't want freedom? Yeah, we could do perception management with the people. It's actually tried out also. Songs, CDs and things like that, which is circulated in this thing, and recruit Tibetans to, let's say, guard the Chinese border. I mean, there are ways of doing all these things which are little different, out of box solutions. Look, there's one more thing. Don't think that we are not doing anything. We are doing quite a lot bit, and certain things we can't tell you also here. I'll leave it at that. Okay. As per reports, Chinese triads have been actively funding Islamists in the Philippines. Do you think the Chinese will create and fund the internal front in India like they did in the past? Create and fund. Yeah, look, Yeah. they can try, right? The Naxalites and the left-wing extremists can be influenced through Chinese money. एंड देयर आल्सो सम हमारे देश में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी भी है स्ट्रांग, उसके जरिए भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये बात हमने जो मिस्टर बिपिंद्रा के साथ बात किया था ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ, उसमें तो बताया ही है, ये फुल्ली पॉसिबल है, राइट? सो डोंट दिस थिंग, राइट? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, okay, we have two more questions we'll take. Ask General Sir, what is the Indian liberal fascination with Pakistani geo-economics claim?
The stans are nothing great of a market like they were in the past by looting us. Any other fascination? Look, we'll leave this out. Okay, we don't want to get into the politics of liberals and right wing and all that. There's no right. Each one to his own. So I don't want to comment on that. Okay. The last question. I think Buddhist conference was done in a way to poke Chinese in the eye. Definitely. Yeah, your view, Murli. There's Yeah, nothing. yeah, yeah. So these are the sensitivities dealing with the Dalai Lama, nominating the next successor. All these things, are the ways of pricking the Chinese. या नॉट ओनली दैट हम अभी G20 कर रहे हैं एक हिस्सा किस्सा G20 का हमने अरुणाचल प्रदेश में भी किया अब वो श्रीनगर में भी कर रहे हैं तो बहुत मेथड्स हैं राइट जिस तरीके से हम जो करना चाहते हैं हम कर रहे हैं और जो चुभ रहा है चाइना को इसीलिए वो भी कुछ ना कुछ करेंगे और करने की कोशिश में है ये सब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं जो उस वक्त के लिए ठीक है बट इट इज नॉट हैव मच ऑफ मीनिंग एट द स्टेट हेड लेवल या हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल्स ओके राइट last question I'll take is the Out India campaign in Maldives funded by China? Of course it is. There's no doubt about it. Okay, right. I think we've had enough of questions and we've had we run out of time also. All I'd like to say is thank you for all the questions that you have put. I find some of you people have come and you are motivated to ask questions for China or make comments for China. You're welcome to do so. I'll ignore you. Okay. And if you think you can talk about China and then get away with it, you will not get away with it. And I would also request everyone to troll them back if you feel that someone is talking for China. This is not a channel where we're going to talk for China. Okay, and I couldn't care a damn. Okay, so that is it. For all you know, that guy who's trying to put whatever comments might be a Chinese itself. It's part of their job to keep track on channels like us. So with this, all I'd like to say is thank General Murli. Thanks a lot, Murli, for coming over today evening and explaining it. Because आपने एक अलग तरीके से ये पूरा व्याख्या बताया किस तरीके से China is looming large in the neighborhood. Thank you, and thanks a lot to everyone. If you have anything to say, your last two words, and then I'll close it. No, शुक्रिया धन्यवाद और सबको जो है प्रणाम ये आपने अच्छे से क्वेश्चंस पूछे हैं so thank you very much for this opportunity. Yeah, thanks a lot. The answers come out. Some of them are Pakistanis and they are also paid Chinese shrills, so we'll ignore them. Right? Thanks a lot for attending. Good evening and Jai Hind. Jai Hind.